Good morning, students. This is your Monica Yadav, science teacher. Today we will continue with our chapter Coal and Petroleum. We have done coal and its products, then we have done petrol and its products. So today our topic is natural gas. नेचुरल गैस हमने देखा है कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. किस लिए यूज़ की जाती है? फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर मोस्टली कुकिंग पर्पसेस. So natural gas consists mainly of methane with small quantities of ethane and propane. आपसे बहुत बारी पूछा जा सकता है कि जो नेचुरल गैस है उसका कंपोनेंट क्या है. सो नेचुरल गैस मोस्टली कंटेन मीथेन. मीथेन होती है उसमें और साथ साथ में कुछ अमाउंट में होता है इथेन एंड प्रोपेन. नेचुरल गैस contains about 95% of methane, remaining being ethane and propane. 5% क्या होता है? ethane and propane. अब ये कहाँ मिलती है? along with पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे कुछ ऊपर अबव जो लेयर होती है वो होती है नेचुरल गैस की. देन natural gas is formed under the earth by decomposition of vegetable matter lying under water. जो water के अंदर vegetable matter means plants and animals का जो matter present होता है उसी से form होती है. So decomposition is carried by anaerobic bacteria. Decomposition कौन करता है? Anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria, what are anaerobic bacteria? Those bacteria which decompose the organisms in the absence of air. जो air की absence में decompose करते हैं उसे हम बोलते हैं anaerobic bacteria. So where are they found? Reserves of natural gas in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, Krishna Godavari Delta. Then it is converted into compressed natural gas. How? It is compressed by applying pressure. उसमें हम pressure डालते हैं तो उससे हम बोलते हैं compressed natural gas. So it is easy to store, easy to transport and use natural gas in the form of CNG. It is also called as clean fuel because it does not produce any smoke. वो कोई किसी भी प्रकार का धुआं या स्मोक फॉर्म नहीं करता, इसलिए ये यूज़ किया जाता है एज अ क्लीन फ्यूल. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस? क्या एडवांटेजेस हैं नेचुरल गैस के? इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल. ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है. अब वो कैसे? बिकॉज इट बर्न्स ईजीली एंड प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट. बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. देन natural gas is complete fuel in itself and can be used directly for heating purposes, and it does not produce any air pollution. So you have to learn how or why natural gas is used as a fuel. Then a great advantage of natural gas is that it can be supplied to homes and factories through a network of underground pipes, and this eliminates the need for additional storage and transport. Then uses of natural gas. What are the uses of natural gas? You have to write what are the uses of natural gas. It can be
used as a domestic and industrial fuel. It can be used in thermal power stations, means to generate electricity, or it can be used for transport vehicles. We know that कि अब हमारा जो transport में CNG vehicles की demand increase हो गई है. क्यों? Because it is a clean fuel that does not cause any harm to our environment, जो हमारे environment को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है. इसलिए इसको हम एज अ अल्टरनेटिव टू पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं. Then natural gas is used as a source of hydrogen gas needed to manufacture fertilizers. इसको हम यूज़ करते हैं fertilizers बनाने के लिए. It is heated strongly, so methane present in it decomposes to form carbon and hydrogen. जब हम natural gas, we know this is mostly CH4. जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाती हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन में. तो इस हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर फर्टिलाइजर्स. Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals. बहुत सारे chemicals में हम starting material जो use करते हैं that is natural gas. So today we will do till here because I want you to learn coal, petroleum and natural gas, 3 topics today. You have to revise coal and petroleum also, and natural gas. Why is it used as a fuel at our homes? Then what are the benefits of using natural gas? And then why what are the advantages of using natural gas and where it is used? What are the uses of natural gas? Thank you so much for listening me, and you have to learn properly and you have to attempt the questions also, exercise questions. When you read the topics and when you see the video, try to do your questions also, so that you will come to know that how much chapter you have understood or not.